Hi Ashish, good morning. Good morning, sir. How are Good you, morning. Ashish? I'm fine, sir. Thank you. So let's begin the interview, Ashish. हमें अपने बारे में बताइए. A brief introduction about yourself. Yes, sir. Sir, I was born in Rohtak. Both my parents were teachers. I completed my schooling from Delhi Public School, Arkepura. And after that, I did my MBBS from Maulana Azad Medical College. The internship got over in 2013 October. Since then, sir, due to some unavoidable circumstances, I got diagnosed with a medical condition. So due to that, I did not take up any regular employment. And for the past 2, 3 years, I've been regularly preparing for civil services. Can you tell us more about the medical condition? It's a progressive muscular dystrophy, sir. And because of that, you are not able to take any employment elsewhere. Initially, when it started, sir, then there was some issues, so that Okay. disrupted. So post that, you have been preparing for UPSC. Yes, sir. How many attempts have you already taken with UPSC? Sir, this was my fifth attempt. In 2022. Yes, sir. And can you tell us briefly about the results of these 5 attempts? How have they gone so far? Sir, my initial three attempts were in 2012, 13, and 14. I did not qualify in the prelims then, and after 2013 I gave up altogether because of the issue that I just mentioned. And starting with 2021, I again started attempting, and this year I managed to clear mains, and I'm also facing the interview in UPSC. Perfect. And side by side, you are also, appearing for state exams, and specifically Haryana only you have appeared for? Yes, sir. Okay. About your father, he's also a retired lecturer. Yes, sir. So you never thought of getting into teaching because you come from a teaching family. Everyone Yes, has sir. a background of teaching. Never thought of it? Not really, sir. तो अभी मतलब अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी हाउ डू यू स्पेंड योर डे हॉबीज में आपने क्या मेंशन किया यहाँ पर यू मेंशनड इलेक्ट्रॉनिक्स डीआईवाई प्रोजेक्ट्स watching travel logs and going on drives. So we'll come to that later. So hi Ashish. Hello, sir. So Ashish, you have taken up UPSC as well. Now you are going to face UPSC interview, right? Yes, sir. So you are only preparing for HCS as well, or you have given other exams along with that? Sir, only HCS and UPSC. Only HCS and UPSC. So Ashish, you have done your MBBS. Why didn't you think of pursuing? I know about your medical condition, but why didn't you think of pursuing in the field of medical in the state services and others? Yes, sir. Sir, I've always aspired for a career in civil services, and that is why I did not pursue any career in medical background, sir. So you were aware that if you want to go for civil services, then why you opted for MBBS or your medical background? So the decision to pursue a career in civil services came during my third year of MBBS. That is when I decided. Third year of MBBS. Yes, sir. Right. Okay. No issues. So, Ashish, can you tell me something about in Haryana as well and in other parts of India? We have always, we have witnessed some upheavals with respect to reservation. Yes, sir. So recently, the Supreme Court also gave its judgment on EWS reservation. So can you tell me something about the reservation? That what is your opinion? That should it be there? Should not be there? And what is your opinion about specifically JAT reservation? Yes, sir. Sir, regarding the issue of reservation, I feel, sir, due to historical reasons and, sir, cultural reasons, reservation was a policy which was felt to provide equity to the social classes who were left behind in the development and progress. And sir, so I think it is a good step because it helps people to come to the same level playing field for everybody and achieve their potentials. And sir, regarding the Jat reservation in Haryana, sir, I think that is left to a better evaluation of the actual status. So a better study should be conducted for actual identifying the target population if they're left behind in social and educational fields, sir, then that should be provided, sir.
Right. So, Ashish, in India, do we import or export drugs? Sir, India is a net exporter of medications. Net exporter of medication. Have you heard about API? Yes, sir. What is API, and from where do we procure that, and what is its relevance in drug making? Sir, I think API is application programming interface. I don't know if it is applicable to pharmacy. In that context, I am unaware of. No issues. So, Ashish, being a medical student, you must have recently heard as well about the people who are dying of a sudden cardiac arrest while they are even exercising or they are dancing or somewhat. And many people are mentioning that it is a post-COVID impact. Yes, So, sir. what is your opinion that whether it is a post-COVID impact and why there is so much of deaths because of this? Yes, sir. Sir, there has been an increasing report of young heart attacks, and there have been allegations regarding it being related to COVID. I think, sir, further scientific study is required in this matter. And as far as, sir, the incidences are concerned, it might have something to do with the lifestyle changes because COVID maybe produced sedentary lifestyles, and that has resulted in increased cardiovascular risks, sir. So, can it be stopped? Only lifestyle changes are required, or something else is also required in this? Sir, a better sir screening methodology is required for this. We should be, and sir, there are other things also which are required besides screening, sir. I would say, sir, to counsel people to get regular, evaluate their health as well as visit doctors if they feel any issues. Not to, uh, people sir generally ignore early warning signs, so that should be communicated to people adequately. So, you have also written that you did an internship Yes, sir. for 1 year. Where did you do this internship? Sir, I did my internship in Loknayak Hospital. Where it is? Loknayak Hospital in? Sir, New Delhi. It is a government hospital. Yes, sir. So, would you recommend anyone to go to a government hospital, or do you think that private medical facilities are better? Yes, sir. Uh, Sir, on this issue, sir, whether referring for a private or a public hospital, sir, I think I would recommend based on several reasons. One of those reasons would be the criticality of a condition. Suppose it requires a multidisciplinary approach, then, sir, easy referrals are available in government hospitals as opposed to private hospitals. And sir, the second reason would be that whether a prompt treatment is required or the disease might take a longer course of treatment. So that being, sir, if it can be remedied urgently, then maybe private is a better option. And if it requires longer treatments and cost of treatments are high, so then factoring that in, I think public would be better. Right. So, one of your hobby that you have even said, and the about API, you also mentioned about some electronics field. Yes, sir. So it is a unique mixture of what you have done. That your background is MBBS. Now you are interested in electronics field. So how so much of variation in your interest that on one side there is MBBS, then there is civil services, then there is electronics. तो ये confusion आपके दिमाग में है या आप create करना चाहते हो जीवन में? No, sir. I'm not confused at all about it, sir. I've always been passionate about science. And so, sir, I had mathematics as well as biology in my 12th. And during my MBBS also, sir, a lot of new gadgets were coming up every year. The phones would upgrade or laptops would change. And that got me curious about all this. So in 2014, I started experimenting with coding. That brought me to Arduino microcontrollers, and that microcontrollers got me interested in electronics. So So that do you proceed or have you pursued anything commercially as well, or from the job perspective as well, or entrepreneurship perspective from for your electronics field? Sir, I've tried to make a few devices like a sanitizer dispenser. I assembled a drone. I did something for watering my plants, set up an Arduino sensor and a water tank with a tube on a servo motor and some casing that I made for it. I do those as a hobby project, sir. So far, I've not done anything commercial. So you are a creative person, electronically. So why don't you start a company? Why don't you want to pursue entrepreneurship?
कि आजकल तो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा हल्ला है, मेक स्टार्टअप इंडिया है, अब तो शार्क टैंक भी आ गया है, तो आपने उस फील्ड की तरफ क्यों नहीं सोचा? व्हाई यू वांट टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज? हमें एक देश में उभरता हुआ यंग भारत का एक उभरता हुआ एंटरप्रेन्योर मिल सकता है। Yes, sir. Uh, Sir, I've not thought about pursuing any commercial endeavors of that sort. My interests have been regarding to understand science better, and so far I've been restricted to that, sir. आशीष, मुझे थोड़ा सा एक फंडामेंटल डिस्कनेक्ट महसूस हो रहा है. आई टेल यू द रीजन व्हाई आई हैव दैट फीलिंग राइट Yes, नाउ. sir. मेडिकल फील्ड में परस्यू करना, एमबीबीएस करना, वी ऑल नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट इनटू एमबीबीएस एंड एवरीथिंग. सो वो एक बड़ी प्रेशियस सीट को मुझे लगता है आपके पास जब वो आ गई, आपने उसको वैल्यू नहीं किया. सो आई डोंट नो व्हाट पुश्ड यू टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज. बट मेरे हिसाब से एक डॉक्टर भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है. एंड वी लुकिंग एट अ कंट्री लाइक इंडिया जिसमें डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो ही इतनी खराब है. सो आपका योगदान वहां पर बहुत ज्यादा अहम हो सकता था कंट्री के लिए, राइट? तो Yes, sir. मुझे थोड़ा सा आप ये बताइए कि कैसे आपको किस तरह से मोटिवेशन आई, क्योंकि अगर आपका मोड था कि मुझे सिविल सर्विस करनी है या सोशल सर्विस करनी है, तो डॉक्टर से बड़ी सर्विस तो कोई है नहीं. तो आपको Yes, और क्या एक्सपेक्टेशन है सिविल सर्विसेज से कि आपको लगा कि नहीं, मुझे अपना जो आपका डोमेन है आपने उसको छोड़ा? व्हाट पुश्ड यू? yes, sir. Sir, it is true that being a doctor, social service is definitely a primary thing that a person can do. Sir, my motivations for civil services were driven by a diversity of challenges and opportunities that come in a career of a civil servant. Also, sir, civil servants occupy leadership positions from a very young age in their careers, and this brings them in various domains like sir, policy implementation, formulation, which touch lives of many people. And because of that, sir, I think the job satisfaction of a civil servant is greater, and that is the sort of career that I wanted to aspire for and I prepared for. बट आशीष जी, प्रॉब्लम इज कि फिर आपकी मेडिकल फील्ड की पढ़ाई का यूसेज तो अब सिविल सर्विसेज में कुछ भी नहीं है. सो आपके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा टू चेंज यू इनटू अ पर्सन हु कैन बी अ एडमिनिस्ट्रेटर. डॉक्टर आप बहुत अच्छे बन सकते हैं, साइंस में आपका बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका थोड़ा ज्यादा सोच विचार, आपकी हॉबीज हैं, तो आपका माइंड तो एनालिटिकल है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप ज्यादा सूटेबल हैं उस तरह के करियर के लिए. इट इज समथिंग दैट आई फील पर्सनली. Yes, sir. Uh, Sir, I think my medical training can be a basis for a career in civil services because civil services has a diverse pool of talent, sir. People from all walks of life come together, share ideas, and so I think, sir, I can contribute my bit to it, and I can learn from others as well. चलिए फिर एक From काम करते हैं, yeah, आप एक काम करिए, मुझे ऐसी तीन चार चीजें बताइए. अगर हम आपको डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम लगा देते हैं, आप क्या ऐसी तीन चार चीजें इंस्पायर करके कर सकते हैं मेडिकल फील्ड से? व्हाट आर द चेंजेस दैट यू आर प्लानिंग टू ब्रिंग? yes, sir. Sir, as an HDM, sir, besides my regular duties for law and order and land related matters and other dispute adjudication, particularly to health and sir medical fields, some suggestions come to my mind, sir. One would be, sir, I think maybe creating a better connect between the rural and the grassroots and the actual health delivery systems. So information, education, and counseling, those could play a role. So I think, sir, sensitization, if the health department so requires my assistance, I would readily provide that. Sir, other than that, sir, I can also think, sir, if there are any budget related issues of the health department and it's left to my discretion, I can promptly address them. And sir, I think a compassionate attitude comes naturally being a doctor. So I think, sir, that can be of utility, sir. Right. So Ashish, you have also written that you like to watch travel blogs and go on drives. So Yes, any sir. specific travel blog that you watch? Yes, sir. Sir, one of the travelogues on YouTube that I watch is a channel called Manish Solanki Vlogs, sir. He is a guy from Gujarat and Which he one? just Which goes one? Manish Solanki Vlogs, sir. Manish That's Solanki. the Okay. yes, sir. That's the name of the. And what is the prime? Or what is the interest that, or what pushed you towards watching travel vlogs? Yes, sir. Sir, the first that travelogue that I watched
was because I was interested in seeing some Satara fort, sir, of Shivaji Maharaj. So I wanted to see that how the fort is located. There was some thing that I was reading in my textbook. So around 2 years back, I started watching. Then, sir, I got interested in it, and I've been following him recently. You also written that you have you like to go on drives. So Yes, where sir. have you traveled till now? Sir, I usually drive either in the city, if any household chore requires that. Sometimes I drive, I go to Chandigarh, so then I drive on my own, and sometimes to Delhi. For the past 2, 3 years, I've not traveled farther than this, sir. Okay. So, Ashish, what are the prospects of tourism industry in Haryana? Yes, sir. Sir, tourism industry needs to be further boosted up, and sir, we have Kurukshetra. There are a few places, sir, which are of significant importance, like Kurukshetra, sir, and also, sir, wildlife sanctuaries. They can be exploited. They can be used, sir, for providing tourism. And other than that, sir, I'm unable to think other things at the moment, sir. Right. आशीष, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है हरियाणा का, हरियाणा के अंदर टूरिज्म का? I'm sorry, sir, I don't know that, sir. आशीष जी, आप जैसे हरियाणा से हैं, तो एक देयर इज कीप्स कमिंग बैक, देयर इज अ डिबेट कि चंडीगढ़ कैपिटल हरियाणा की होनी चाहिए, हरियाणा वाले बोलते हैं हरियाणा की होनी चाहिए, पंजाब वाले बोलते हैं पंजाब की होनी चाहिए. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Yes, sir. Sir, I think, sir, Chandigarh is a very well planned and developed city, and it has been a UT for so long, sir. And now Mohali as well as Panchkula, both of them have been developed by respective states, and the dispute is ongoing. So I think, sir, the primary goal is to settle the dispute, and if both parties can agree to develop their own, so that would be my suggestion, sir, on this. बट हिस्टोरिकली तो आपको नहीं लगता कि ये पंजाब का राइट बनता है चंडीगढ़ के ऊपर? Sir, yes, I think in the settlement, sir, even in the when, sir, the states were bifurcated, yes, I think it was promised that Haryana will develop a capital of its own and Chandigarh would go to Punjab. But, sir, I think now it has become a very emotional issue for masses on both sides. So now the situation has evolved, and I think a win-win for both the parties would be better than sticking to the original maybe. Right. So, Ashish, in India, there is a lot of cultural geographical diversity. And in spite of that, why we are not able to develop tourism sector in our country? The tiny countries like Singapore, Mauritius, Maldives, they get a lot of more tourism compared to India. So what are the issues that you think that India has, and what steps could be taken that the tourism industry should be boosted? Yes, sir. Sir, regarding, sir, small island nations having robust tourism industries, sir, I think those countries, they spend a lot of money on developing infrastructure, sir, road connectivities to hinterlands, and they provide, sir, very sir, they provide basically, sir, tourism in those countries comes down to selling experiences. Whereas, sir, I think currently in India, our focus has been on the monuments and places itself, sir, rather than providing experiences. So, one suggestion that comes to my mind regarding this is that if we develop the tourist the spots that we want to develop, and if we can provide the incoming tourists a stay at places, sir, like it has been done on, I think, riverfront in Varanasi, where tourists can come and they can stay. So similar things can be done in other places. And sir, the infrastructure needs to be boosted up. And sir, the service sector needs to be trained and adequately supplemented with the other things. So, do you think that the security situation, जैसे भी recently मुंबई में हुआ था that Korean YouTuber was traveling, so that is one factor that there is a lack of tourism in India? Sir, I think that can be a contributory factor, and the security also needs to be ramped up, sir. Right, Ashish. So that is it from our side. Thank you. Thank you, sir. So now let's go for a feedback mechanism. So Dikshant sir.
आशीष, देखिए, यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ मेडिकल साइंस, है ना, एंड वहां से सिविल सर्विसेज का जो जंप है ये बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कर रहे हैं, बट Yes, sir. देन टू जस्टिफाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू हैव द राइट आंसर्स। वो जस्टिफिकेशन मुझे थोड़ा सा उसमें कमी लगी, मतलब आप बहुत बेटर फ्रेम कर सकते थे उसको, तो उसके ऊपर आपको एक अच्छा आंसर बना के रखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे लगता है हर इंसान इसके बारे में आपसे जरूर बात करने वाला है। सेकंड, हालांकि हमने उसके बारे में आपसे सवाल नहीं पूछा, बट आपके लिए एज फैक्टर भी एक क्वेश्चनिंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि यू आर Yes, sir. ऑलरेडी 33, है ना, एंड Yes, sir. 58 में तो रिटायरमेंट हो जाती है। तो अगर Yes. एक 21 साल का, 23 साल का, 22 साल का बच्चा हो, गवर्नमेंट उससे बहुत ज्यादा जूस एक्सक्रीट कर सकती है, आपसे इतना नहीं कर पाएगी, बिकॉज 33 बीइंग 33 यू हैव सर्टन वेज एंड मीन्स, तो आपको ट्रेन करना शायद मुश्किल हो, ऐसा सोचा जा सकता है, राइट, ऑल्दो ऐसा Yes. कुछ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट देन आपके पास इसका भी जवाब रेडी होना चाहिए। इन दोनों जवाबों के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। और इसमें थोड़ी सी बात, सॉरी सर, इसमें थोड़ी सी बात मैं ऐड करूंगा कि आपको ना जवाब जब देना है ना, तो ये एज फैक्टर आपके लिए नेगेटिव नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। जी सर। आपने इसको प्रेजेंट ऐसे करना है कि सर ये पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि मेरे पास लाइफ एक्सपीरियंसेस ज्यादा हैं और मैं मेच्योर हूँ कंपेयर टू अदर्स, आई हैव बेटर सेंसिबिलिटीज कंपेयर टू अदर्स, सो दैट आई कैन टेक डिसीजंस एट अ बेटर पॉइंट, माय इमोशनल इंटेलिजेंस इज आल्सो डेवलप्ड। ठीक है, तो ये चीजों के ऊपर आपने इसको थोड़ा पॉजिटिव हैंडल करना है, क्योंकि आपकी यूपीएससी की इंटरव्यू है, वहां भी ये चीजें आपको मैटर करेंगी। जी सर। ठीक है जी, हाँ जी सर। तीसरा, आशीष, आपका जो हॉबीज है ना, हॉबीज के अंदर ये जो वॉचिंग ट्रैवल लॉग्स है ना, इसमें कुछ गलत हॉबी नहीं है ये, बट इसकी वजह से एक पूरी यूनिवर्स खुल जाती है ट्रैवलिंग की आपके लिए। एंड यस कि सर। ट्रैवलिंग इतना बड़ा डोमेन है, कहीं से भी किसी भी एरिया से सवाल पूछा जा सकता है, तो अगर कोई और। अगर आप नहीं, आपने इसमें स्पेसिफिक कर दो, स्पेसिफिक हो जाओ। हाँ, जैसे आपने मनीष सोलंकी के ब्लॉग्स देखे, अगर ट्रैवलिंग ब्लॉग्स देख रहे हो ना, तो आप बोलोगे सर स्पेसिफिकली ना मैं इंडिया के ट्रैवलिंग ब्लॉग्स देखता हूँ, कि जो लोग इंडिया में घूमते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे यूट्यूबर्स आइडेंटिफाई करो जो इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ, जी ठीक है, सर। एग्जैक्टली। आप ये मत बोलोगे सर ट्रैवलिंग ब्लॉग्स कहीं के भी, बात समझ रहे हो आप मेरी। जी और सर। स्पेसिफिक हो जाओ, ताकि आप कोई स्कोप ही ना दो उन्हें कि आप पूछ आपसे पूछ पाए। दूसरा, आप वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि टीवी पे कुछ सीरियल्स आते थे पहले, ठीक है, जैसे कि ना बड़ा फेमस सीरियल है जो मुझे याद भी है, जब हम छोटे छोटे थे तो देखते थे, मुसाफिर हूँ यारो करके एक सीरियल आता होता था। जी सर। ठीक है, शायद आपने भी देखा हो, हाँ, आप हमारी और आपकी एज ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ठीक ठीक मुसाफिर सर। हूँ यारो वाला सीरियल अगर शायद आपने नहीं देखा, तो आप एक बार नेट पे सर्च करके देखना, मुसाफिर मुसाफिर जी हूँ सर। यारो। ठीक है, ऐसा एक सीरियल आता था। तो ये चीजें जो आप स्पेसिफिक हो जाओ कि मैं सर इंडिया स्पेसिफिक ट्रैवल ब्लॉग्स देखता हूँ। ठीक है, तो ओके सर। टूरिज्म के आसपास जितने क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो देख लेना। और ये जो आपका ड्राइव वाली हॉबी है ना, ड्राइव वाली, ये भी ये मुझे, हटा दो, हाँ, ये हटा ये दो। मुझे ठीक नहीं लगी ये भी। ठीक है, ओके सर। ये हटा दो, बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी हॉबी में, क्योंकि देखो ना, आप ज्यादा ड्राइव, तो ड्राइव का मतलब क्या होता है कि मतलब दूर दूर तक जाते हो, आप लद्दाख गए सर, मैं सर मुंबई चला गया, मैं गोवा चला गया ट्रैवल ड्राइव करता हुआ, वो एक हॉबी हो सकती है। तो जी सर। इस हॉबी को मैं तो कहूंगा कि आप इसको ज्यादा फोकस में ही ना लाएं। आई एग्री। तीसरी ओके चीज सर। जो है, आपने जो मैंने एपीए वाली बात पूछी थी, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं सर। ओके सर। ठीक है, जो हम चाइना से मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, दुनिया मैक्सिमम चाइना से इंपोर्ट करती है वो। ओके ठीक सर। है, तो आपको ना मेडिकल फील्ड में बड़ा स्ट्रांग होना है आपको। आपने जी एमबीबीएस सर। भी करी है, आपने एक साल की इंटर्नशिप भी करी हुई है। तो ये जी छोटी सर। छोटी चीजें, इनको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि आईटी और मेडिकल फील्ड का मिक्सचर, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, ये जी सर। कैसे बेटर हो सकता है, टेलीमेडिसिन, सेक्टर सेक्टर वाली चीजें, इन पे पूछना आपको, यूपीएससी एचसीएस दोनों में आपको ये काम आएगी। जी तीसरा, सर। अगर ऐसी कोई कंपनी है इंडिया में जो इन चीजों के ऊपर काम करी, जैसे आपको पता होगा किरण मजूमदार शाह शॉ का नाम आपने सुना होगा, जी राइट, सर। और बहुत सारी कंपनीज जो इन चीजों पे काम कर रही हैं, रिसेंटली भी रिलायंस भी इस फील्ड में आया, अदानी भी इस फील्ड में आए हैं, आईटी और मेडिकल को मिक्स करने वाली फील्ड में। तो इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। तीसरी चीज जो है कि आपका, जो सर ने भी पॉइंट आउट किया कि जो डिफरेंट फील्ड्स आपने पकड़ी हुई है ना, मेडिकल हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका थोड़ा सा बेटर रिलेशनशिप का आंसर फ्रेम करो। ठीक ओके है, सर। थोड़ा सा बेटर रिलेशनशिप का आंसर फ्रेम करो कि कहाँ पे आप इन चीजों को बेटर कर सकते हो। और तीसरी चीज जो है, वो चंडीगढ़ वाला इशू, जी वो सर। नहीं बोल सकते सर आप पंजाब को देखो। हाँ, वो आपने बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया, मैं तो अभी वो आपको और बड़ा पूछना बड़ा चाहता जल्दी गिव अप कर दिया आपने वो। ओके सर। ठीक है, वो आप हरियाणा की इंटरव्यू फेस कर रहे हो यार, पंजाब में बोल देना पंजाब ले ले, है ना, था। अपने हरियाणा में नहीं बोल सकते आप। ठीक ठीक है, है सर। तो आपको इन सारी चीजों के ऊपर एचसीएस में सवाल आने चाहिए, बाकी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। जी सर। ठीक है, जो आपका स्थिरता होती है ना, हिंदी तो समझते होंगे आप, जो स्थिरता जी है सर। आपकी बॉडी में, वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा फैक्टर है, कामिंग फैक्टर है आपकी वॉइस में भी और आपकी पर्सनैलिटी में, बहुत अच्छी बात है वो। जी ठीक है, सर। दैट कैन गिव यू लॉट ऑफ पॉजिटिव इन योर इंटरव्यू। ओके ठीक है, सर। तो दैट इज इट। तो ओवरऑल तो थिंग्स लुक गुड, ऐसा कुछ हमें नेगेटिव पॉइंट नहीं अभी तक अभी आपका कोई दिखा। थिंग्स आर फाइन, यू आर प्रेजेंटेबल, यू वेल ड्रेस्ड, एंड आपने जो भी आंसर्स
दिए हैं वो बहुत समझ के, सोच समझ के फिर आंसर दिए हैं, तो जल्दी आपने नहीं दिखाई, विच जी टेल्स अस कि आपकी मेच्योरिटी रिफ्लेक्ट भी हो रही है। हाँ। तो वो अच्छा है, तो अच्छी बात है। उसको तो मेंटेन बाकी करिए। इसमें भी काम आएगा यूपीएससी की अगर आपने मॉक इंटरव्यू देनी हो तो आप भी हमसे कांटेक्ट करें। हमारे मॉक इंटरव्यू अभिषेक सराफ सर लेते हैं, जो जी रैंक सर। 8 है यूपीएससी में, आईएएस ऑफिसर हैं। जी ठीक है, 2017। सर। वो सारा यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू लेते हैं। ओके सर। ठीक है, तो वो अगर आपने मॉक इंटरव्यू, वैसे ही हमारे पास अराउंड 400 के आसपास स्टूडेंट्स मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ओके अगर सर। आप उसमें मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप दीक्षांत सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी ठीक है, सर। तो उसमें जो आप ग्रुप में हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हाँ जी रखे हैं सर, अपना, मैं व्हाट्सएप उसमें ग्रुप में दीक्षांत हूँ। सर का नंबर होगा एज एन एडमिन। तो आप उनको कांटेक्ट कर लेना, सर साथ ही बैठे, इनको कांटेक्ट कर लेना, तो वो भी फिक्स वी फाइल विल कर अरेंज सकती है। दैट फॉर यू। ठीक है, एचसीएस में भी काम आएगी आपको, यूपीएससी में भी काम आएगी अभिषेक सराफ सर के साथ इंटरव्यू। ओके सर, आई विल डू दैट सर। राइट, राइट। सो सर आशीष, बस, हाँ और कुछ हाँ पूछना सर। चाहेंगे आप? हाँ सर, बस एक ही क्वेश्चन था सर, जो मतलब ये सर, मैं बेटर कैसे इसको जस्टिफाई करूं कि मैं डॉक्टर होने के बाद, सर मेरा इंटरेस्ट मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली थर्ड ईयर में ही बना था, और थर्ड ईयर में बना, उसके बाद मेरा थोड़ा डिसरप्ट हो गया था, बिकॉज मैं 12 13 14 मेरी कंडीशन मुझसे एक कदम आगे चल रही थी, तो आई वाज ट्राइंग टू कैच अप समथिंग जो इम्पॉसिबल था। फिर मैंने इसीलिए सर बिल्कुल ब्रेक ही ले लिया था, और मैंने फिर 2017 में मैंने मतलब मैं फाइनली डिसेबल्ड हुआ था, और मैं उसके बाद मैंने आई गॉट बैक ऑन माय फीट सर। फिर उसके बाद सर 19 में कोविड आ गया, तो वो एक बड़ी डिसरप्शन हो गई थी, तैयारी चल ही रही थी, बट वो फिर कोविड मतलब मेरे को भी हो गया था, और फैमिली में तो मेरा वो टाइम भी थोड़ा बहुत वेस्ट हुआ। और उसके बाद सर फिर अब इसमें मतलब मेरे को जब मौका मिला कि नाउ आई कैन अगेन वर्क, तो आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन, ये तो आपके पढ़ा। लिए बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। आप अगर आपसे वो पूछते हैं तो आप इसको रिफ्लेक्ट करना कि सर मेरे लिए कोई हिंड्रेंस हिंड्रेंस नहीं है, मुझे कुछ रोक नहीं पाया। मेरे लिए एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि मेरे को कुछ अचीव करना है। कि सर मेरी जी सर। बॉडी में इश्यूज आए, मेडिकल कंडीशन किसी को भी आ सकते हैं। आपको जी मेडिकल कंडीशन आए, ठीक है, आपने उस मेडिकल कंडीशन से रिकवर किया, ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर शो करता है। जी तो सर। अगर आपसे वो पूछते हैं ना कि आपके पॉजिटिव्स क्या हैं, तो आप बोलोगे सर मेरी विल पावर डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। आपसे वो पूछेंगे तो आप एग्जांपल दोगे, सर मेरी ये कंडीशन आई, ठीक है, तो मेरे को मेडिकल फील्ड से स्विच करना पड़ा क्योंकि मैं इतनी देर वहां पे इस काम में नहीं कर सकता था। ठीक है, अब मुझे सॉरी टू से मुझे पता नहीं है कि कंडीशन क्या है, क्योंकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। जी सर। ठीक है, तो पॉसिबली ये हो सकता है, जहां तक मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल कंडीशन में बहुत देर खड़े होकर काम होना था, वो आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ होता होगा आई सपोज। बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर। ना? तो आप ये बोल सकते हो कि सर उसमें इतना था तो मैं वहां पे इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सो आई डोंट वांट टू बी अ बैड डॉक्टर। राइट, आई नो दैट आई कैन बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो आप इस तरह से घुमा सकते हो इन चीजों को। दूसरा, आपकी जो आपका ये एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, मोटिवेटिंग एटीट्यूड है, एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हो, जैसे आपको अगर याद होगा 2014 की शायद बात है, ईरा सिंघल मैम ने टॉप किया था यूपीएससी। जी सर। है ना? तो वो कहेंगे सर कोई भी जो प्रॉब्लम आती है लाइफ में, चाहे मेडिकल कंडीशन हो चाहे इमोशनल कंडीशन हो, वो इरिवर्सिबल नहीं होती है। मैं उसी फील्ड में काम करता हूँ। मैं उसी चीज से देखता हूँ कि मैं हमें एमबीबीएस में, डॉक्टरी में ये सीखा है कि चाहे लिवर की प्रॉब्लम आ जाए, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए, चाहे किडनी की प्रॉब्लम आ जाए, शुगर की प्रॉब्लम आ जाए, कुछ इरिवर्सिबल नहीं है। वही चीज मैंने अपनी पर्सनैलिटी में वाइब की, कुछ इरिवर्सिबल नहीं है। मेरी मेडिकल कंडीशन आई है, मैं उसके ऊपर काम करूंगा, मैं आगे स्ट्रांगली जाऊंगा। तो ये एक आप इस तरह से इस चीज को हैंडल कर सकते हो। तो मतलब सर जस्टिफिकेशन, बट सर मतलब मैं इसमें सर मेरे बस दो एलिमेंट रह जाते हैं जो मैं कई जगह सजेशन वैसे लेता हूँ, बट आपका भी मैं इनपुट जरूर चाहूंगा कि सर एक तो बिना सिंपैथी लिए, और क्योंकि सर वो शायद आई थिंक काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है कि किसी को सिंपत्ति ऐसे। नहीं लेनी है। हाँ। सिंपैथी तो चाहिए ही नहीं ना हमें। सिंपैथी चाहिए नहीं आपको। आप यार और पैरों पे खड़े हो अपने, आप इतने मोटिवेटिंग, आप मेहनत करके आए हो यहाँ तक, किसी ने पेपर और थोड़ी लिखा आपके लिए, आपने खुद लिखा। नहीं, सिंपैथी तो बिल्कुल क्यों सर। चाहिए? सिंपैथी तो चाहिए ही ना। लिखा है। बल्कि हाँ। आपको ये जो अभी सर ने जो आपको पॉइंट बताया ना आशीष, कि आपका जो जर्नी है, आपने 2013 में पहली बार दिया था ना एग्जाम, जी सर। तो जी सर। 13 के बाद और इतने गैप के बाद फिर भी आपके अंदर इतने साल तक मोटिवेशन रही, ये तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में ही बता देना चाहिए। सर फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन 2013 एंड माय लेटेस्ट अटेम्प्ट वाज इन दिस। तो आपने गैप क्यों लिया, फिर वो आपसे खुद ही पूछ लेंगे कि गैप का क्या रीजन था, फिर आप जस्टिफाई करिए कि ये रीजन था। ओके सर। तो हाँ जी, हाँ जी, अब बोलिए बोलिए। हाँ मतलब सर ये है कि बताइए। उसको बस कॉम्पैक्ट करने का तरीका वो मेरे को शायद अब समझ में आ रहा है कि सीधा पहले इंट्रोडक्शन में ही 13 बोल दूंगा, 23 बोल दूंगा, तो हाँ वो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, तो मेरे को एक लंबा आंसर देने की बजाय वो 3 4 क्रॉस क्वेश्चन में शायद आप ही छोटे अपनी छोटे। इंटरव्यू को घुमाएंगे ना हाँ, इधर वो भी। तो क्या होगा, आप अपने इंटरव्यू गाइड करेंगे, वो आपके लिए बेहतर है। और जो आपका मेडिकल से ये वाला जो जर्नी का सर ने सवाल बताया, आई थिंक वो परफेक्टली अलाइन होगा कि मेडिकल, देखो अगर तो यूपीएससी या एचसीएस
को चाहिए ही ना होते मेडिकल फील्ड वाले लोग, तो ये शायद कभी अलाउ ही ना करते। तो जी ऑब्वियसली सर। अगर एक बनाया है कि आ सकता है कोई भी, तो इनके लिए कोई बार उसका है नहीं। सो वो आप कुछ इलीगल तो कर नहीं रहे, बस उसको जस्टिफाई करने के लिए एक सपोर्टिंग आंसर आपको रेडी करना है, दैट्स इट, है ना। और आप जो जो सीख के आ रहे हैं मेडिकल फील्ड से, वो आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, तो उसके बारे में आप अच्छे से पढ़िए। जी सर, दैट्स इट। थैंक यू सर, राइट थैंक यू। आशीष, थैंक यू तो वेरी बाकी आप मच। सर से कांटेक्ट करना, एक हम आपके अभिषेक सर, आप सर के साथ इंटरव्यू जरूर करवाएंगे। हाँ, वो भी अच्छा ओके रहेगा सर। आपके लिए। ठीक है, जी सर, थैंक यू आशीष, ठीक है, थैंक यू सर, ऑल द ऑल द बेस्ट। बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।